Hello friends, today we'll discuss Harrison based fever of unknown origin. सबसे पहले पीटर स्टोफ एंड बीसन दे गेव अ डेफिनेशन फॉर फीवर ऑफ अननोन ऑरिजिन विच स्टेट्स कि पेशेंट को फीवर होना चाहिए फॉर 3 वीक्स. कितना होना चाहिए? 101 डिग्री फ़ारेनहाइट्स एंड यू शुड हैव 2 रिकॉर्डिंग्स ऑफ दीज. देन patient should be evaluated by you for 1 week. Then they have modified it a little bit. They have added कि पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए और ऑब्लिगेटरी इन्वेस्टिगेशंस क्या होनी चाहिए. यहाँ पे स्टेट की हुई है. ये तो सीबीसी से आ जाएगा, देन ये केएफटी से आ जाएगा, फिर ये एलएफटी से आ जाएगा. ब्लड कल्चर दे हैव स्टेटेड 3 एंड यूरिन कल्चर अलोंग विद यूरिन एनालिसिस, रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन, प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस, देन एक्सरे एंड अल्ट्रासाउंड, not CT, then ANA and RA factor, not CCP, then ESR, CRP, tuberculin skin test, IGRA, creatine kinase, and ferritin. Now, FEO, they have stated it is atypical presentation of some common disease only rather than a rare disease. It could be a rare disease, but generally it is atypical presentation of common disease. So, differential diagnosis of fever of unknown origin is very extensive, as they have stated in this table. So you can remember it as like INNA, that is infections, non-infectious inflammatory disease, neoplasms, and miscellaneous causes. So infections, it can be bacterial, it can be fungal, parasitic, and viral. In non-infectious, you can have SLE and all other autoimmune disease, vasculitis, granulomatosis disease like sarcoidosis, and autoinflammatory syndromes they have stated like Still disease, Blau syndrome. Neoplasms, hematological malignancies can be there, solid tumors can be there, and benign tumors can be there. Then after this, they have mentioned meningic endocarditis. Meningic endocarditis is nothing but paraneoplastic presentation of adenocarcinomas. They have mentioned Schnitzler syndrome also, which includes urticaria and bone pain. You will have urticaria and bone pain. Then in malignancies, most common they have stated malignant lymphoma, drug-induced fever. They have stated many drugs. They have stated in drug-induced fever, which is bad pill. That is beta-lactams, anticonvulsants including phenytoin, carbamazepine, and lamotrigine. Drugs for tuberculosis, HRZ, isoniazid, rifampicin, and pyrazinamide, procainamide, interferons, lamotrigine, and linezolid. Then generally they ask what is continuous, remittent, and intermittent fever. Continuous fever, all of you know कि किसी भी दिन ऐसा नहीं है कि फीवर नहीं आएगा, हर दिन फीवर आ रहा है. जैसे टाइफाइड में बोलते हैं फीवर टूटता नहीं है, लोबर निमोनिया एंड बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस. रेमिटेंट फीवर का मतलब है फीवर आएगा बट बेस लाइन को टच नहीं करेगा, फिर से फीवर आएगा. सो इनमें फ्लक्चुएशंस विल बी मोर देन 1 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. इंटरमिटेंट फीवर में क्या होगा कि एक दिन बीच में फीवर नहीं आएगा, इट विल टच बेस लाइन. तो रेमिटेंट फीवर में मतलब इट इज़ वेरिंग, बट ऐसा नहीं है कि फीवर नहीं आ रहा है बीच में. सो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ब्रूसेलोसिस एंड ट्यूबरक्लोसिस. बट इंटरमिटेंट फीवर, malaria, septicemia, and kala-jar. Okay. Then Harrison gives this approach to fever of unknown origin. सबसे पहले तो उस क्राइटेरिया में फिक्स हो रहा है नहीं हो रहा, पीटर स्टोफ एंड बीसन की क्राइटेरिया में कि फ़ीवर आपका 101 से ज़्यादा होना चाहिए, 3 हफ्ते से आपको फ़ीवर आ रहा है और 1 हफ्ता आपने ऑब्लिगेटरी इन्वेस्टिगेशंस कर लिया है, पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है. अगर उसमें फिट हो रहा है तो उसका हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन लेना है. फिर इफ़ पेशेंट इज़ ऑन एनी एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, यू हैव टू स्टॉप इट. क्यों? क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और एंटीबायोटिक फीवर को कम कर देंगे और लिम्फ नोड है तो उनका साइज़ कम कर देगा. तो ऑब्लिगेटरी इन्वेस्टिगेशन, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, यू हैव टू गेट इट डन. देन एक्सक्लूड मैनिपुलेशन विथ थर्मामीटर. हाँ, एक होता है आपका फैक्टिशियस और एक होता है आपका फ्रॉडुलेंट फीवर. फ्रॉडुलेंट फीवर क्या है कि पेशेंट ने थर्मामीटर लिया, उसमें नॉर्मल टेम्परेचर आया बट उसने फिर गर्म पानी में डाल दिया थर्मामीटर और फिर टेम्परेचर ज़्यादा आ गया एंड देन ही शोड इट टू यू. दैट इज़ फ्रॉडुलेंट फीवर.
Factitious fever is that he injected contaminated water through IV access, or फिर because contaminated water has parogens, then all obviously he will have spike in his temperature. फिर आपने वो भी मैनिपुलेशन कैसे कर लिया, फ्रोडोलेंट के लिए आपने दूसरे साइट्स पे चेक कर लिया. ओके, देन if he is taking any medication, then you have to replace it or you have to stop that medication. Then they have given PDCs. PDCs are potential diagnostic clues that you have, like any hint that patient is giving in his or her history, that becomes a PDC. So if they are giving like they have burning micturition, you do urine examination or something like this. Then if PDCs are absent, then you go for cryoglobulin and fundoscopy. So this is for this. Cryoglobulin rules out your immune complex vasculitis, any chronic viral infections, any occult lymphoproliferative disorders. देन फंडोस्कोपी भी कर लिया, उससे भी कुछ नहीं आ रहा. फिर यू गो फॉर पैट सीटी या फिर आप चेस्ट और एब्डोमिनल सीटी कराओ, वो भी नॉर्मल आ रहा है, उसमें भी कुछ नहीं पता चल रहा. देन यू हैव टू गो फॉर इन्वेजिव टेस्टिंग लाइक टेम्पोरल आर्टरी बायोप्सी और लीवर बायोप्सी. इफ पेशेंट इज मोर देन 55 years they have suggested a temporal artery biopsy. उससे भी कुछ नहीं आ रहा, then you consider some therapeutic trial like you give interleukin-1 antagonist, that is anakinra, or you give colchicine if you think it is familial Mediterranean fever, or you give NSAIDs. Okay, so you have to avoid antibiotics, glucocorticoids, ATT, but exception is patient अगर मर रहा है तो you have to give antibiotics, उसमें कुछ नहीं कर सोचना ज़्यादा. और इगरा और TST पॉजिटिव है तो आप ATT का ट्रायल ले सकते हो 6 weeks पे. लेकिन अगर 6 weeks पे भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, then please stop ATT. Familial Mediterranean fever में they have suggested give colchicine, it works very well. Then trial of interleukin-1 antagonist, that is anakinra, because it is very helpful in autoinflammatory conditions. Okay, that's for all. Thank you.